guys, welcome back to my channel. I am so excited for this video. You guys can see like I'm really happy already. So today's video is the first video in my Diwali week series, and of course I had to start my series with a Nykaa haul. मैंने बहुत टाइम से शॉपिंग कर रखी थी, but I was waiting for my Diwali week. So I hope you guys enjoy watching this video. Also stay tuned till the end of this video because I have a giveaway for you guys, and it's gonna be a really huge giveaway. So yeah, I hope you guys enjoy watching this video. If you're new here, make sure you like this video, subscribe to my channel if you haven't already, click on the red subscribe button, click on the bell button right next to it, and you'll be notified every time I upload a new video. You can also follow me on Instagram, and yeah, we'll just get started. First of all, you all, I am obsessed with this background. I am so happy. मेरा मूड अभी फिल्मिंग के लिए इसीलिए बना क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा लग रहा था. My house is almost done. It's not completely done, but I had to start filming this video, right? Okay, so let's start with the haul. I'll show you some boring stuff that I got. Masks. I mean, these are necessities. But the thing is, I wanted to show you guys these masks that I got. So I got it from this company. Can you guys see? And I got pink wale masks bhi from the same company. And these masks suck. Like, I'm sorry, but they are so bad. My mom and I use them, and इनका ये जो एक तो ये थ्रेड है, ये इतना ज़्यादा फ्रेजाइल है कि थोड़ा सा भी खिंचता है तो वो टूट जाता है. एंड देन इसके यहाँ पे जो वायर है ना, दैट इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट. सो या दिस इज समथिंग दैट आई रियली स्ट्रगल विद. आई मीन इनकंसिस्टेंसी है, कुछ कुछ मास्क ठीक है, कुछ कुछ मास्क ठीक नहीं है. सो या आई ओवरऑल डिड नॉट लाइक देम एज सच. आई गॉट अनदर सेट ऑफ मास्क बिकॉज आई डोंट वांट कि ऐसे नोज पे मेरा स्लिप करता जाए या फिर बार बार इसका ये जो इलास्टिक है वो निकलता जाए. देन इट डिफीट्स द पर्पस. द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज द Nykaa हैंड सैनिटाइजर. सो आई प्रीवियसली यूज लाइक 3 bottles ऑफ दीज, एंड ये काफी अच्छा है. इसमें 70% अल्कोहल है, एंड या यू गेट लाइक आधा किलो सैनिटाइजर. सो सैनिटाइजर का बिग बॉटल ही मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है आजकल. सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट. द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस इज अ बाथ स्क्रबर. सो मुझे एक्चुअली अजीज ने बोला कि लूफा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि लूफा के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया स्टक हो जाता है. आई डोंट लाइक ऐसे बस थोड़ा सा सोप लगा के हाथ से कर लिया, मुझे ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है. एंड अभी मेरे घर में रेनोवेशन हो रही है, एंड आई एम लिटरली हेड टू टो कवर्ड इन डस्ट एंड सीमेंट. सो आई वांट समथिंग लाइक दिस जिससे ना मैं अच्छे से स्क्रब करूँ. एंड या दिस इज वेरी हैंडी डैंडी. आई गॉट 2 ऑफ दीज एक्चुअली. एक मेरे बाथरूम में है, एंड दिस इज द अदर वन. द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट आर फेस शेवर्स, एंड दिस इज द वन दैट आई गॉट. सो द one that I usually get are the Tinkle ones, and वो Tinkle वाले ना out of stock थे. So I just thought I'll give these a try, and these had really good reviews. These are by Can. Yeah, for women face. So I think ये कोई कोरियन कंपनी ही है. तो इसके अंदर ऐसे पेस्टल कलर्स के वाओ, ऑफ कोर्स आई हैड टू ड्रॉप समथिंग, बट या इसके अंदर पेस्टल कलर के फेशियल रेजर्स है, एंड इनका ऐसे कवर के साथ आता है. ये दीज रिटेल फॉर 199 रुपीज, विच आई थिंक इज अ गुड डील. एंड मैंने इन सब चीजों को सेल पे लिया है. सो लाइक अभी जितनी भी सेल थी मैंने सेल पे ही लिया है, एंड मैं सेल के टाइम पे ये हॉल वीडियो डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को भी डिस्काउंट मिले. बिफोर आई मूव ऑन टू अदर थिंग्स दैट आई गॉट, आई वांट टू क्विकली शो यू गाइस 2 मेकअप थिंग्स दैट आई गॉट. फर्स्ट इज अ ब्लश, एंड दिस इज बाय कलर बार. दिस इज द कलर बार मैट इल्यूशन ब्लश. आई थिंक दिस इज व्हाट इट्स कॉल्ड. वेरी क्यूट पैकेजिंग, एंड मैंने ये इसलिए मंगवाया है क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि कलर बार के जो ब्लशेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं. दिस इज द आउटर पैकेजिंग, अगेन वेरी नाइस एंड वेरी स्लीक. Really like the packaging. And under say this is what the color looks like. Can you guys see? Yeah, I think this will look very nice. So this is the blush. The next thing that I got is the Maybelline Master Chrome highlighter. So you guys know, like I have broken 2 or 3 of these. For some reason every time I get this now ये मेरे से टूट जाता है, but this is what it looks like. It's such a beautiful gold highlighter, and yeah, you guys know one of my favorite highlighters of all time. And the reason I got this is because मैं अभी beginners के लिए videos करने वाली हूँ, and I needed like a cheap option for highlighter because मेरे पास ज़्यादा high end है. This is such a blinding formula, looks amazing, like बिल्कुल ही buttery formula है, and ना बिल्कुल भी texture enhance नहीं करता. It looks super smooth, and yeah, I can't say enough good things about this. A lot of people ask me कि drug store में मेरा favorite highlighter क्या है. Definitely the Maybelline Molten Gold. I cannot recommend this enough. Now coming to a lot of bath and body stuff. The first thing that I got is by this brand called Love Beauty and Planet. This is a huge bottle and this is like coconut water and mimosa flower aroma
रेडिकल रिफ्रेशर बॉडी वॉश। बॉडी वॉश को छोड़ के सब पढ़ लिया एंड आई वाज जस्ट लाइक कि मैंने क्या मंगवाया, मुझे याद भी नहीं था। सो बॉडी वॉश मंगवाया है मैंने एंड लुक एट दैट बॉटल यू गाइस। आई थिंक आई गॉट दिस बिकॉज दिस इज ह्यूमंगस एंड इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे। आई थिंक निधि ऑल्सो यूज दिस एंड शी रियली लाइक्स इट। दिस इज क्रूअल्टी फ्री एंड वीगन एंड आई वांट टू स्मेल दिस। आई थिंक इट्स गोना स्मेल रियली नाइस। अभी तक मैंने इनमें से कुछ भी स्मेल नहीं किया है। इट smells so good. Oh god, it smells so good. I can't wait to take a shower. मैं कल इसी से नहाने वाली हूँ and yeah, I really like the packaging. I think इसमें बहुत ज़्यादा quantity मिलती है and coconut water and mimosa flower का जो ये weird सा scent है, it actually smells delicious. I can't wait to take a shower with this. It smells really good. It actually reminds me of this Bath and Body Works का candle. I can't really put my finger on it, but yeah. The next thing that I got is a hair serum and that is the L'Oreal Paris Extraordinary Serum. This is what it looks like. Amazing serum you guys. Like मैंने बहुत टाइम बाद एक बहुत अच्छा सीरम लगाया है and you guys know my hair is like fried, so these days I'm just using products जिससे मेरा बाल manageable लगे। इसको लगाने के बाद मेरे बाल ऐसे सिल्की स्मूथ शाइनी हो गए थे। आई रियली लाइक दिस सीरम। इसका एक तो पैकेजिंग इतना ज्यादा लग्जूरियस है, कैन यू सी लाइक such a cool packaging and यहाँ पे ना लॉक भी हो जाता है, so you can easily travel with this. Okay, so in this next डब्बा I have so many Bath and Body Works का सामान. I don't know you guys, like मुझे Bath and Body Works पे ना बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला। मैं कभी भी Bath and Body Works पे डिस्काउंट पे नहीं जाती थी, बट अब मैं जितनी बार जाती हूँ मुझे इतने हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं, so I got tempted. I will accept it. I got super tempted to buy things. The first thing that I got is the Gingham body mist. This is the छोटा वर्जन that I got. The thing is इसके ना पैकेजिंग में इशू है। इसका ये जो नोजल है, कैन यू गाइस सी, यहाँ पे ना ड्रिप कर रहा है प्रोडक्ट ऑलरेडी। आई ट्राई टू लाइक स्प्रे सम ऑन माई सेल्फ, बट इसका ये जो नोजल है, सी इट्स नॉट वर्किंग। सो व्हाट आई हैव टू डू इज कि मैं इसको ना एक दूसरे ट्रैवल साइज पैकेजिंग में ट्रांसफर कर दूंगी, देन आई यूज इट। इसका जो सेंट है, it smells so good. I cannot describe it क्योंकि it's very subtle and it's very breezy. I'm kind of irritated that I paid for a faulty product, but yeah, I did not have time to return it. So anyway, the next thing that I got is another body mist and that is the Saltwater Breeze body mist. Again, first of all, इसका जो packaging है, it is so nice. Can you guys see? So sleek and just I really like this gold and aquamarine. For those who don't know, I think aquamarine is like my color or my stone. I'm a Piscean, so when I saw this, it just reminded me of the ocean and my zodiac sign, and that is why I got it. Yeah, that's such a stupid reason to get a body mist, but you know, that's why I got it. It smells really like the beach and it smells so good. Like this is something जो मैं गोवा में अगर पार्टी करूंगी तो मैं ये लगा के जाऊंगी, because I think it will just suit the whole vibe. तो अगर आपने मेरे रिकमेंडेशन से कोई परफ्यूम खरीदा है आपको अच्छा लगा हो, so I would recommend कि आप ये भी ट्राई करो, आपको ये अच्छा लगेगा. Okay, then next two things I got are body lotions and दोनों पे मुझे ऑफ मिला था. The first one is called 1000 Wishes. This is what it looks like. Again, look at the packaging. It reminds me of New Year. इसका जो कंसिस्टेंसी है ना, it's like a little bit thick, but it dissolves. तो आप जैसे इसको मसाज करोगे पूरा आपके बॉडी में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा. इट स्मेल्स नाइस, बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है. मैंने पहले भी बाथ एंड बॉडी वर्क्स के लोशंस यूज किए हैं, सो दीज आर अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द विंटर सीजन. Oh my god. Okay, the next lotion I got is Saltwater Breeze. I did not even realize I got the same thing. So ये इसका जो बॉडी मिस्ट का लोशन है, यही मैंने खरीद लिया, which makes sense. मुझे ये पसंद आया था. So ये मैंने बाद में खरीदा था ना, तो मुझे याद नहीं था कि मैंने ये मंगवाया है. This also smells so nice. इसका जो सेंट है ना, वो इससे थोड़ा सटल है. This is more strong. This is more subtle. So yeah, you can just see which one you will like. I will apply this also. And yeah, that is the last beauty Bath and Body Works related thing that I got. Moving on, the next two things that I got are from Nykaa's new lingerie collection. So they launched their own lingerie brand called Nykid. If I'm saying it right, I don't know. Maybe I'm not saying it right and box bhi ulta hai.
kit. I think that's how you say it. So I got 2 things from them. I just wanted to see कि उनका lingerie कैसे होगा, because bras are something and undies are something जो हमें lifelong चाहिए होगी. So I thought why not just see what works and what doesn't work. Okay, so this is the bra that I got. This is what it looks like. So this is called the Nykaa Skin Padded Wire T-shirt Bra Demi Coverage, nude color में. So this is what it looks like, and oh my god, I had no expectations because I am kind of iffy about lingerie when I first try them, but this is one of the best bras that I've ever tried. ये इतना comfortable है, and इसका जो underwire है, it is probably one of the most comfortable underwire bras I have ever tried, and I have worn this for like long period of time. So I really like this. Like, it is super comfortable and it just gives your boobies like the best shape. Looks amazing, super comfortable, and I really like ये जो color है. It's like the perfect nude for me. इसका price है 999, and I would compare this with Enamour के bras, and एक और बहुत expensive company है, so उसके भी bras बहुत अच्छे होते हैं, but again pricey होते हैं. So I feel like this is one of the better options, and under 1000 rupees आपको मिल जाएगा. Lingerie is something जिसपे आपको invest कर लेना चाहिए. So I would suggest if you're looking for a good innerwear, you can definitely go see कि उनके पास कितने variation. I think they have a lot of variation. They have sizes for plus size women also, so I think that is great. They're inclusive. Now the next thing that I got is actually a night dress, and it's a night suit, night gown type का. So this is what it looks like. It's like a t-shirt night dress, so it's like super long, है ना. So ये मेरे knees तक आता है, but it's a night dress, and मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था. And you guys know, like, I'm all about comfort clothing. इसका जो material है, it is really good, super soft, super comfortable, and this is perfect to sleep in. I feel like इसको पहन के मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी. I cannot wait to wear this. I'm just waiting कि मेरा renovation खत्म होगा, then I will wear this and just sleep soundly. This one is a little pricey. This one is for 1700 rupees. That's very expensive, but again मैंने सेल पे लिया था, so मुझे I think 10% ऑफ मिला था. But yeah, anyway थोड़ा expensive तो है, I would agree. So देख लो if you want to invest in it, because this is very soft and I personally really liked it. Also इसमें pocket है. How cute is that? And इन पे इनका brand लिखा हुआ है. For the first time I really like इनका ये जो brand का logo है. It looks very delicate and very nice for a lingerie brand. So that was my Nykaa haul, and I am really happy with everything that I got this time. Not a lot of makeup, but that's okay. Now coming to the spicy stuff and the giveaway. So for this year I decided to give away 2 gift cards to 2 of you, and both the gift cards will be of 5000 rupees each. So 2 winners will get 2 gift cards, 5000 each, and the gift card is obviously going to be a Nykaa gift card, because I think that is the most appropriate. Now the rules for the giveaway will be very simple. I'm gonna pick 2 winners who are super active and just, you know, comment on my videos, are my regular viewers. I want to give back to my subscribers who have made all of this possible and who have just supported me endlessly through my ups, through my downs, especially my downs. So of course this giveaway is for my subscribers. I love you guys. So yeah, the first rule is that you have to be a subscriber and be a supporter of this channel. That's all I want. The second thing is you have to comment on every single video that I post this week. So 7 videos. So I'll just check कि आप लोगों ने सारे videos पे comment किया है कि नहीं, because like I said, I just want that you guys engage with my content and, you know, just like my content. And yeah, for the Nykaa gift card giveaway, those are the only 2 rules. That's all you have to do. Now other than this, I have 7 giveaways planned for you guys on Instagram. I get a lot of love and a lot of DMs and messages on Instagram. Instagram पे ना हमारी एक छोटी सी खुद की एक click बन चुकी है, and we are like super close there. So for that you have to go and check out my Instagram, because हर दिन मैं एक giveaway post करूँगी इस week. And yeah, वहाँ पे आपको giveaway post दिख जाएगा हर दिन. There's no specific time, but I will just post it once a day. You can just check the rules, follow them. Don't just do it for the giveaway. I would say, like, if you genuinely like my content, do it. Otherwise आप लोग irritate हो जाओगे,
फिर कोई फायदा नहीं होगा। सारे गिव अवे के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इंक्लूडिंग डेट्स की कब मैं क्या अनाउंस करूंगी, कैसे अनाउंस करूंगी। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। दैट वाज आवर फर्स्ट दिवाली वीक वीडियो एंड आई होप you guys enjoyed watching this and I hope you guys will enjoy all the giveaways and just I can't wait for you to see all the videos. I have some exciting videos coming for you guys, some really different videos जो मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पे की थी and I really enjoyed doing them. And yeah, that's about it. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe before you leave and I'll see you guys next time. Bye bye.